Hello, my dear students. Welcome to our channel Easy Chemistry. In our previous class, we have discussed interconversion of Fischer projection formula and Flying-Wedge projection formula. And in this class, we are basically going to discuss the RS nomenclature of organic molecules having a chiral center, at least one chiral carbon center. Okay, so what is our topic? I repeat, our topic is RS nomenclature of the organic molecule in which at least one chiral carbon center is present. And if you are not aware of what is Fischer projection formula, what is Flying-Wedge projection formula, then I'll provide the link of our previous class, that is part 1 of RS nomenclature class. You can go through the class and you will easily understand what is Fischer projection formula and what is Flying-Wedge projection formula and how to interconvert Fischer projection formula and Flying-Wedge projection formula. Otherwise, you will not understand the RS nomenclature practically. Okay. So, from many sides of our students, they request to uh, deliver the lecture in Hindi also. So, I must use Hindi language as well as with English language. Okay, my dear students. So, let's start. So, हम देखेंगे इस क्लास में कि RS nomenclature कैसे लिखा जाता है. सो RS नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, इसके पहले आपको एक सीरीज उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप. ये आपको दिमाग में रहना चाहिए. सो आई विल प्रोवाइड द प्रायोरिटी सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू नीड आई विल प्रोवाइड यू PDF फाइल. तो मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं PDF फाइल आपको दे सकता हूँ. सो what is the RS nomenclature? So let's start with an example. Basically, don't waste time. Let's start with an example. So in our example, like this, CH2, CH3, C, C, CH, this is pH, phenyl, and this is CH2. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि कायरल सेंटर कौन सा होता है. सो नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द कायरल कार्बन. सो दिस वन इज द कायरल कार्बन बिकॉज the 4 bonds 1 2 3 4 groups, that is 1 2 3 4, the 4 bonds attached to asterisk carbons are different. दो 4 बॉन्ड इसमें अटैच है, तो ये 4 बॉन्ड अलग अलग से होता है. ओके, सो ये जो RS नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कि चैन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉक रूल्स. विच रूल? चैन, इनगोल्ड and Prelog formula. So don't waste time to write down the formula. Okay, formula लिख के याद रखने का कोई जरूरत नहीं है. You will not asked to write down the formulas, but you will given such example, such problem, and you will asked to write down its RS nomenclature. So let's start with an example. So this is the asterisk carbon. Yes, this is the chiral carbon, and here 4 different types of bonds are attached. Okay, so now according to the priority series, this is the highest priority group, phenyl. So this is like this, the priority series. This is priority. दिस इज दी प्रायोरिटी सीरीज. ये प्रायोरिटी सीरीज है. तो प्रायोरिटी सीरीज में क्या बोलते हैं? पहले फिनाइल, उसके बाद कौन आता है? फिनाइल के बाद आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज एल्काइन ग्रुप, दिस इज 2. एंड उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है एल्किन पार्ट, दिस इज 3rd.
प्रायोरिटी ग्रुप, एंड उसके बाद आता है ये एल्किल ग्रुप, दिस इज दी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है CH2 CH3. So now look, the lowest priority group कहाँ है? ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन दी वर्टिकल बॉन्ड, ये दो जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे, और ये कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है? ये फिशर कॉन्फ़िगरेशन है, ये फिशर कॉन्फ़िगरेशन है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो इसमें क्या होता है? ये है वर्टिकल बॉन्ड, दिस इज दी वर्टिकल बॉन्ड, ये भी वर्टिकल बॉन्ड है, और ये कौन सा होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ये भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है. ओके, तो ये वर्टिकल बॉन्ड है, ये है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड. सो हम पहले देखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल बॉन्ड में है या नहीं है, वेदर द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द वर्टिकल बॉन्ड और नॉट. सो इन आवर प्रेजेंट केस, हमारा केस में क्या है, वर्टिकल बॉन्ड में जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी वर्टिकल बॉन्ड में प्रेजेंट है. The lowest priority group is already in vertical bond, so you don't need to reshuffle it. Okay, my dear student. So now trace the path. Trace the path 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 अगर हम जाएंगे, कैसे जाएंगे? इफ वी ट्रेस द पाथ 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, 1, 2, 3. सो ये जो हम पाथ ट्रेस किया, ये पाथ कहाँ से गया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमा. ये पाथ जो घूमा है ये है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन vertical bond. No need to reshuffle. So this is, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये जाएगा एस. इसका नोमेनक्लेचर क्या है? एस. बिकॉज हम जब ये पाथ ट्रेस करेंगे, बिकॉज व्हेन वी आर ट्रेसिंग द पाथ 1, 2, 2, 3, देन इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज एस, देयरफॉर इट इज एस. तो इसका पूरा नोमेनक्लेचर क्या होगा? पहले बैठेगा एस, तो एस से शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा? एस 3 इथाइल, एस 3 इथाइल, 3 फिनाइल, always there is a hyphen between number and letter, always there is a hyphen between number and letter, and here S behaves as the number, so there is a hyphen. So S 3 ethyl, 3 phenyl, paint 1 in, 4 ine, paint 1 in, 4 ine. Okay, so the last E of in will be omitted because here the nomenclature ended with the E. Okay, so this E of in, E a ni जो in होता है वो in E वाला लास्ट में जो E होता है वो E omit करना पड़ेगा because E आ गया आइन के लास्ट में. So this is the nomenclature S, because so this is an example. So we will going to take another example right here. So I think I can remove all this thing. हम ये इसको साफ कर देंगे. So ये हमारा रहेगा. Now in our next example, COOH, OH, this is pH. So in this case what will be the priority series? Priority series क्या क्या हो जाएगा? Because
Here it is the chiral carbon. So chiral carbon and the four different types of bonds which are attached with this chiral carbon. तो चार अलग 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 तरीके के बॉन्ड है जो chiral carbon के साथ जुड़े हुए हैं. वो कौन सा बॉन्ड है? वो है OH. उसके बाद है कौन सा है? COOH. उसके बाद है PH. PH मीन्स फिनाइल, दैट इज C6H5 एंड लास्ट में होता है हाइड्रोजन. ओके, सो ये है फर्स्ट सबसे आगे. उसके बाद COOH. so lowest priority group is in the hydrogen. Now the ambiguity is that the lowest priority group, so this is the first priority group, एक नंबर, ये जाएगा 2 नंबर, ये जाएगा 3 नंबर, ये जाएगा 4 नंबर. बट देखिए ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, ये कौन सा बॉन्ड में है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा बॉन्ड में है? ये है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड में. So the lowest priority group here is in horizontal bond. So we have to make the lowest priority group in the vertical bond. So इसको हम vertical bond में ले आना पड़ेगा. कैसे हम ले आएंगे इसको vertical bond में? तो इसको घुमाना पड़ेगा. तो हम कैसे घुमाएंगे इसको? 4 जाएगा इधर, ये जाएगा 3, हम 2 को लेके ऐसे घुमा रहे हैं. सो ये जो हम ऊपर को लेके, ऊपर को पकड़ के घुमा रहे हैं ना, तो हम ये जो 2 नंबर का बॉन्ड है इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये अनशिफ्टेड रहेगा. सो हाइड्रोजन जाएगा इधर 3 के जगह पे, 3 जाएगा 1 के जगह पे और 1 आएगा 4 के जगह पे. सो कैसे हो गया ये बॉन्ड अभी? नाउ दिस लुक्स लाइक COOH because COOH is not moved. So 1 will go to the position 4. So this is OH. 4 is like this here, and this is the, so this now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now trace the path 1 2 3. ओके, सो यह क्या था? यह लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो था ये वर्टिकल बॉन्ड में नहीं था. तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाज नॉट इन द वर्टिकल पोजीशन. So we have to make the lowest priority group is in the vertical position by rotating the molecules. Okay, so now trace the path 1 2 3. So 1 2 3 हम trace करेंगे तो कैसे जाएगा? 1 2 3. So this is clockwise or anti-clockwise. This is clockwise rotation. 1 2 3. This is clockwise rotation. Therefore clockwise. सो 1 2 3 अगर हम ये ट्रेस करेंगे कैसे रोटेशन हुआ? 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ. सो दिस इज एक्चुअली R आइसोमर. सो दिस इज R आइसोमर. ओके, सो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कैन इनगोल प्रीलॉग रूल्स जो बोलते हैं, तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में है तो हमें शिफ्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें रोटेशन करने का कोई जरूरत नहीं है. हाँ, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हमें घुमा के, तो रोटेशन करके वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ये वर्टिकल बॉन्ड में ले आना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज R. सो नाउ और अगेन वी आर गोइंग टू look at another example here. So now we start from flying wedge projection formula, then we will do RS nomenclature on it. Okay, कैसे होगा? तो ये कैसे होगा अभी? Now so this will be like this. In our next example, COOH PH sorry for disturbance. So the COOH group here, this is the COOH group, and this is the CH3 group, this is PH group, this is OH. So this is the Flying-Wedge projection formula, and the name is atrolactic acid. This is the atrolactic acid.
So is how to derive RS nomenclature, RS isomer, whether it is R isomer or S isomer. But the configuration given here, it is flying wedge configuration. So इसको इसमें क्या दिया है, इसमें flying wedge दिया हुआ है. So before going to start, first this flying wedge structure should be converted into Fischer projection. So इसको पहले Fischer projection में हमको convert करना पड़ेगा. So हम कैसे convert करेंगे इसको Fischer projection में? तो हमारा रूल क्या बोलता था? तो हम थोड़ा इसको घुमा देंगे. Now rotate. So this phenyl in our previous class we have already discussed this. So the phenyl and the OH, and this is the chiral carbon center. The phenyl, this carbon center, chiral carbon center, and this OH are in the similar plane, or in the same plane. So just rotate the plane and make the OH here. So if we make the OH here, so pH will bend this side, pH will bend right side, and these are unshifted. COOH, this is the flying wedge formula, this is the OH, and this is the dashed. So this is the below the plane, this is above the plane. Now the horizontal, now the vertical position in the Fischer. So this is flying wedge, this is also, ये क्या है, ये है flying wedge. So flying wedge से हमको जब Fischer में जाएंगे, when we go to the Fischer projection from flying wedge, the horizontal, the vertical positions will be occupied. Mind it, the vertical positions will be occupied by the group present in the same plane with the chiral carbon, that is OH and pH. So this top position will be occupied by OH and this is occupied by pH. Now the vertical position. Now look, यहाँ पे जो vertical position में जो pH, the top, the bottom vertical group कौन सा साइड में बेंट हुआ है इन फ्लाइंग वेज में? राइट साइड में बेंट हुआ है. That is the pH, that is the bottom vertical group. This is the bottom vertical, this is the vertical line, this is the upper vertical line, this is the bottom vertical line. The bottom vertical line in flying wedge bent in the right side. Okay, if this is the axis, this is bent on the right side. So यहाँ पे जो above the plane है COOH, ये फिशर में राइट साइड में जाएगा horizontal position में. So this is occupied by COOH. Why this is occupied by COOH? Because in flying wedge, phenyl, this is the bottom vertical bond, bends towards something left, towards something right. Therefore the horizontal position, the right side of the horizontal position in the Fischer projection formula will be occupied by the group which is present in the above the plane, in flying wedge. So the rest is the CH3. Now can engulf prelogue. So what is the priority group? In priority is OH first, then COOH, then phenyl, then hydrogen. Sorry, here is no hydrogen, this is CH3. So now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Again the problem here, the lowest priority group is not in the vertical position, the lowest priority group is in the horizontal position. So we ought to make the lowest priority group in the vertical position. So हमको ये मॉलिक्यूल को घुमा के जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, 4 नंबर वाला जो ग्रुप है, उसको हमको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा? उसको हमको वर्टिकल पोजीशन में, जहाँ भी होगा, अबव द हो सकता है और बॉटम भी हो सकता है, हमको वर्टिकल पोजीशन में इसको ले जाना पड़ेगा. इसलिए हम इसको घुमा ही देंगे. तो दिस इज हियर, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर. नाउ we will rotate the molecule by holding the bond at OH. So OH will be unshifted. So CH3 will be here. Follow the arrows. Where the CH3 goes? CH3 goes here at the position of 3. That is here the CH3. And pH goes here, and COOH will move to the number 4 position. This is COOH. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now trace the path 1, 2, 3. Trace the path 1, 2, 3. This is 1, this is 2, this is 3. So whether it is clockwise or anti-clockwise,
obviously this is anti-clockwise. This is anti-clockwise. Anti-clockwise. So this is S isomer. This is S isomer. So what will be the IUPAC name? This is S 2 hydroxy, S 2 hydroxy 2 phenyl 2 phenyl propanoic acid. So my dear student, I hope you all enjoyed this class and अब सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप ये हमारा चैनल फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम जो ये क्लास कराते हैं ना, हम ये डिटेल थ्योरी में नहीं जाते, हम एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए ये हम क्लास कराते हैं। सो वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द एग्जाम्पल्स, because whether you are not familiar with the examples, you will not answer the questions. Okay, so you must familiar with the examples rather than going to the deep theory. Okay, so hope you all enjoyed the class, and these are the very important examples, and these examples are very frequently asked in your exam. So my dear students, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज बी विथ अस and keep your knowledge enriching. Okay, my dear student, good night and have a good day.